हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग आईसीएसई का क्लास 10 का हिस्ट्री सिविक्स का पेपर डिस्कस करेंगे, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, ओके, जो कि तुम्हारा मंडे को एग्जाम है। ओके, सो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, द इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन डैश। तो इसका आंसर होगा डी, जो कि होगा 6 months। ओके, the maximum composition of the Lok Sabha is dash 530 or 540, 550 or 556। तो इसका आंसर होगा 550। So Lok Sabha member term is 5 years, whereas Rajya Sabha member term is 6 years. We know that. Okay, so the Council of Minister is collectively responsible to the dash लोक सभा, राज्य सभा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। इसका होगा आंसर ए, लोकसभा। Then a house has 350 members. On a given day 25 members are present. For which of the following reasons does the speaker adjourn the session of the day? Indiscipline in the house, lack of quorum, business of the day is over, there is no questions to admit। तो इसका आंसर होगा बी, that is lack of quorum। When a case comes from a subordinate court, the high court deals with it under dash। तो इसका आंसर होगा डी, appellate jurisdiction। Then 7 number, which of these was not an aim of the INC, that is Indian National Congress? To train and organize public opinion in the country, to promote friendly relations between nationalist politic workers, to make the world aware of the true nature of the British, to formulate popular demands and present them before the government। तो इसका आंसर होगा डी, to formulate popular demands and present them before the government। Okay, dash announced that the successor of Bahadur Shah could not use imperial titles। तो इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड डलहौसी। Okay, which of these is not an repressive policy of Lord Lytton? तो इसका आंसर होगा ए, सॉरी बी होगा इसका आंसर, जो कि है एल्बर्ट वेल। देन 10 नंबर, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, राजा राममोहन रॉय डैश। तो ज्योतिबा फुले ने क्या खोज किया था? सत्यशोधक समाज का। तो राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज। ओके, द खिलाफत मूवमेंट was started in India by dash Ali brothers। Non-cooperation movement was suspended due to dash चौराया इंसिडेंट। चोरी चौरा इंसिडेंट। Which of the following clauses was not part of the Indian Independence Act of 1947? इसका आंसर होगा सी, the British Parliament had legislative control over India। Which of the following is a common ideology of fascism and Nazism? इसका आंसर होगा सी, to uphold one party and one leader। Hitler attacked Poland because he wanted to dash regain the Danzig fort। Identify the founders of non-aligned movement। तो इसका आंसर होगा ए, नासिर टूटू एंड नेहरू। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आता है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर कौशल, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट। Mr. Kaushal is 26 years of age. Which of the following
which house of parliament can he be a member of and why? So Mr. Kaushal यहाँ पे मिस्टर कौशल यहाँ पे कितने एज के हैं? 26 इयर्स ऑफ एज है उनका, ठीक है। तो वो यहाँ पे कौन से हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रहेंगे? ऑब्वियसली लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में क्या 25 इयर्स ऑफ एज से अबव मेंबर आ सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर होगा लोकसभा। विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? लोकसभा। बिट 1 का जस्ट अ सेकेंड, मेरा व्हाइट बोर्ड काम नहीं कर रहा है। ओके, सो इसका आंसर होगा मिस्टर कौशल इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, be above 25 years of age if they are a member of the Lok Sabha. ओके, सो ये था वाई का रीजन। 2 मार्क का आंसर यहाँ पे है। सो अब सेकंड क्वेश्चन है, मिस अनीता wants to approach the Lok Adalat regarding a case. Mention any 2 advantages she will have by taking her case to the Lok Adalat. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट एनी टू एडवांटेजेस बोला गया है लोक अदालत का। तो हमने फर्स्ट क्या होगा? शी विल एलिमिनेट हाई कॉस्ट, शी विल गेट इनएक्सपेंसिव जस्टिस। ओके, एंड सेकेंड है शी विल गेट क्विक जस्टिस। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड ग्रेड, मेंशन एनी 2 ways in which the British ill treated the इंडियन सोल्जर्स। तो कोई भी 2 ways बताने हैं। The East Indian Company discriminated against their Indian sepoys. They were poorly paid, ill-fed, and badly housed. They were forbidden for wearing any caste and or turbans or beads. As a result, there was resentment among the Indian troops. Okay, so but question number 4 है, state any 2 objectives of the Muslim League. so यहाँ पे इसका आंसर होगा, the 2 objectives are, first है to promote the loyalty of Muslims towards the British government, और second क्या है, to overcome the feeling of the hostility among Muslim towards other communities. Okay, then fifth bit है, what are the causes of Quit India movement? तो causes क्या है? First cause था was the collapse of Cripps mission. Okay, the INC did not grant unconditional support to the Britishers during World War II as assumed by the Britishers. और फिर और एक क्या था, feeling of nationalism. Okay, जो कि that gained the main popularity among the Indian masses. ठीक है, तो एनी, अब 6 नंबर है, एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INA, इंडियन नेशनल आर्मी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू मेक इंडियंस फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश। ओके, एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है उसका कि हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी दैट कैन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश टू गेट एन इंडिपेंडेंस। ओके, so next है 7 number, any 2 objectives of UNO, United National Organization. तो main objective क्या है? Maintenance of the international peace and security, promotion of the well-being of peoples of the world, and national cooperation of these ends. ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1। ओके, नाउ पार्ट 2 हम करते हैं जो कि है सेक्शन ए। इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है इस सेक्शन में से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम डिस्कस करते हैं। द लेजिस्लेटर मेक्स द लॉ व्हिच गवर्न द कंट्री with reference to the union legislature, answer the following question.
तो इस लाइन के बेसिस पे हमें आंसर करना है. What is the maximum composition of the Rajya Sabha? Why is it called the permanent house? तो maximum composition क्या है राज्य सभा का? Okay, so maximum composition of Rajya Sabha है 250 members and 238 members are elected by states and in the union and 12 members are nominated by the president. That's why it is known as permanent house. Now why it is known as a permanent house? Because it cannot be dissolved as each member is elected for a period of 6 years and 1/3 of the total members of the house retire after every 2 years. ठीक है, तो ये था राज्यसभा का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. नाउ एनी 3 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ राज्यसभा. तो इसका है the proclamation of emergency by the president is passed by the Rajya Sabha if the Lok Sabha is not in session or has been dissolved. The Rajya Sabha enjoys equal powers with the Lok Sabha in matters like amendment or constitution election and impeachment of the president, vice president and judges of the Supreme Court and Higher Court. Okay, तो ये सब एक्सक्लूसिव पावर ये सब तुम्हारा ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है. ये सारे ये तीनों तुम्हारे क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस है. Okay, any 4 legislative powers of parliament. So introduction of bills, source of information, amendment of constitution, summoning the houses of parliament. Okay, so ये था तुम्हारा direct questions from the book. Now question number 4 जो कि है the president of India is nominal head of the union administrator. With reference to the president, answer the following question. अब president के ही सारे क्वेश्चंस आएंगे. व्हाट इज द टर्म प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट क्या है यहाँ पे? एंड गिव एनी 2 रीजंस फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो 2 रीजन भी देना है हमें. तो फर्स्ट है कि he or she shall hold his office during the term of 5 years. 5 years का टर्म के लिए प्रेसिडेंट होल्ड करता है. एंड फ्रॉम द डेट on which he or she is entered upon his or her office. ठीक है, the president is elected indirectly as spending huge amount of money, time and other resources for direct election of the nominal executive was not considered necessary by our constitution makers. ठीक है, तो second question है हमारा 3 kinds of emergencies which president can declare. तो प्रेसिडेंट 3 इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जो कि है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 एंड रेफरेंसेस. ठीक है, अब है 4 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. ऊपर था 4 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट. यहाँ पे है 4 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो कि है एड्रेसेस सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, डिसॉल्व्स ऑफ लोकसभा, nomination of the members and promulgate ordinances. Okay, now question number 5 जो कि है any independent judiciary is a feature of federal governance. With reference to the Supreme Court, answer the following question. अब ऊपर प्रेसिडेंट के रेफरेंस में, इधर सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में सारे क्वेश्चंस आएंगे. So who appoints the judges of the Supreme Court? What is the composition of the Supreme Court? So obviously Chief Justice of India and the judges of Supreme Court are appointed by the Prime Minister. President. ठीक है, प्रेसिडेंट ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है? अपॉइंट करता है अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द कॉम्पोजिशन दिया हुआ है जो कि है कि 1 चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस. ठीक है, ये है कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और एक है कि द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस was increased by the parliament
and currently 34 judges including the Chief Justice of India. ठीक है, तो recently ये increase हुआ था, जो कि अभी है 34 judges and Chief Justice of India. Now, bit 2, 3 kinds of cases. Three kind of cases under the appellate jurisdiction of the Supreme Court. Okay, so 3 cases क्या है? Political, civil and criminal cases. Okay, so ये पहले तुम लिख देना what is appellate jurisdiction of Supreme Court, and then उसके बाद 3 cases लिख देना. Okay, explain the term revisory jurisdiction and advisory jurisdiction. ये पूरा बुक में तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तुम वो ही लिख देना. ओके, नाउ सेक्शन बी, इसमें एनी 3 क्वेश्चंस इस सेक्शन से हमें करना है. तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि द व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. नेम द क्वीन हु बिकेम द विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसी. ओके, सो हमारा क्या है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इसका डेफिनेशन लिखना है, ये बुक में ही है, मैं फिर भी एक बार बोल देती हूँ कि इट वाज एन policy extensively applied by East India Company in India until 1856. और ये name the queen who became the victim of this policy. तो रानी लक्ष्मी बाई was pensioned and their adopted son Anand Rao was now not recognized as a lawful successor to the throne under the doctrine of lapse. And Jhansi was annexed by the British East India Company. Any 3 economic causes of the revolt, ये भी book में direct question है. Any 4 administrative changes made by the British after the revolt, ये भी book में ही question का answer है. Okay, so now question number 7, जो कि है what was the first bit है इसका, what was the objective of the assertive nationalist. Mention any 2 contribution of Bal Gangadhar Tilak. So इसका first है कि partition of Bengal 1905, division of Bengal carried by the British victory in India. Lord Curzon, despite strong Indian nationalist opposition, it began a transformation of INS from a middle class pressure group in a national worldwide mass movement. Okay, so who partitioned Bengal? And state any 2 actual reasons behind the partition. तो इधर ये भी तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक में ही दिया हुआ है इसका आंसर. ओके, सो मेंशन एनी 4 मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, ये भी तुम्हारा बुक में ही आंसर है. ठीक है, what were the causes of civil disobedient movement. तो ये तुम्हारा ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. नेम द मार्च which marked the beginning of this movement. ओके, सो ये भी तुम्हारे बुक में ही दिया हुआ है. 3 causes of NCM, non cooperation movement, and 4 clauses of Mounteban plan. सो ये सारे आप तुम लोगों के क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि बुक में है. ओके, now look at the picture given and answer the following question. So जैसा हम लोग इंग्लिश में पिक्चर राइटिंग करते हैं वैसी टाइप का है ये. ओके, सो ये थोड़ा अलग है. आइडेंटिफाई एंड briefly explain the above incident. Okay, so इसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है और अपने वर्ड्स में इस इंसिडेंट को लिखना है. ओके, मेंशन एनी 4 condition imposed on Germany in Treaty of Versailles. The Treaty of Versailles held Germany responsible for starting the war and imposed harsh penalties on Germans, including loss of territory, massive payments, and demilitarization. Name the organization established to maintain peace after First World War. Mention any 3 of its objectives. So यहाँ पे the League of Nations
was an international organization headquartered in Switzerland, created after the First World War to provide a forum for resolving international disputes. ठीक है? Question number 10. What is the composition of Security Council? So, composition ये तुम्हारा बुक में दिया हुआ है. Name any three functions of NCJ जो कि है International Court of Justice. तो first तो है तुम्हारा voluntary jurisdiction. Second है involving procedure for peaceful settlement of disputes. And third है advisory opinion. Okay, so इसके अंदर इसको डिस्क्राइब करना. ओके, मैंने तो सिर्फ पॉइंट्स बोल दिए हैं, लेकिन बुक में इसके पॉइंट्स के अंदर भी बहुत दिया हुआ है पैराग्राफ, तो वो भी लिखना. फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को. यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. एंड 3 फंक्शंस देने हैं, तो तुम लोग कोई भी 3 फंक्शन दे सकते हो, जो कि है अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, mobilizing science knowledge and policy for sustainable development, addressing emerging social and ethical challenges. Okay, so ये तुम्हारा था specimen paper of history and civics of class 10. So मेरा next video होगा MCQ of history and civics, जो कि important questions होंगे and most expected questions होंगे, जो कि मैं कल अपलोड कर दूंगी. ओके, एग्जाम से एक दिन पहले आई विल अपलोड दैट वीडियो. ओके, सो डू वॉच दैट वीडियो एंड मैं इस वीडियो में भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम. बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.